Welcome to Campus Program. Today we are going to Kamala Nehru Public School, Fakwada. Kamala Nehru Public School is a value-based school which believes in education and empowering the young learners. Kamala Nehru Public School, founded in the year 2007, is a modern co-educational school affiliated with CBSE. The school is a Microsoft Showcase School 2015 to 22. The school has bagged the International School Award by the British Council UK 2012 to 21. The school is taking huge strides of glory and pride under the able guidance of school principal, administration and innovation, Ma'am Paramjit Kaur Hiller. The staff of the school is very energetic. In COVID time, school done wonders and take online classes from home. From 4th May, school organized Innovation and Creativity Festival 2023. In this festival, students from class 1st to plus 2 participate in this fest. Our team talked to the chief guest and the principal of the school, and they told us about the Innovation and Creativity Festival 2023. Let's see the shots of Innovation and Creativity Festival 2023. Which is a group of major economies. As a member of G20, South Africa contributes foreign discussions on a wide range of global economies issues, global economic issues and growth and reducing poverty. It advocates for South Africa advocates for the policies supporting climate change. It addressed for the climate changing and supporting sustainability. I represented Brazil. Brazil is a member of G20 group. As a member of G20 group, Brazil participated in their meetings and discussions and also contributed in their group discussions. Brazil will hold its presidency in G20 in year 2022. I represent Mexico. Mexico is the member of the G20. As the member of the G20, Mexico participates in many annual summits and meetings to promote international economic, and Mexico holds the presidency of the year 2012. I represent France. France has an important role in climate change. France has historic 2015 Paris Agreement, which include many countries of world, including G20 members, and France got its presidency in 2011. I represent Germany. Germany is one of the largest contributors in the world. As a member of G20, Germany works with other countries to promote sustainable development and poverty. Germany got its presidency in 2017. It has adopted many safety measures to the environment and said one earth, one family and one future. United Kingdom, UK, is also a member of G20 and it plays a very important role in G20 as it helps to change the climate, changing the climate, economic development and healthcare. In recent years, UK has reduced the greenhouse gas and promises to reduce the greenhouse gas by 2050. Thank you. I represent Indonesia. Indonesia has joined G20 in 1999 in the financial minister level commission. Indonesia has drastically improved the healthcare in the past decade. And the G20 presidency provided Indonesia to showcase the global leadership in setting the global agenda. I represent South Korea. The South Korea is member of countries of G20. It has done so much effort to reduce climate change. The contribution of South Korea regarding climate change are they reduce greenhouse gases and generate renewable energy. Overall, the contribution of South Korea in climate change have been significant role. Thank you. As we all know, the SDG is getting better and better and bigger and bigger. This is a new world by SDG. How our India is going to look like after SDG. The green is getting the new black, as we have written on the placard. Let me show you the world which I have created for SDG and SDG thing the India is going to have. फ्यूचर भी दिखाना है, हम हो रहे हैं तैयार, भारत में पहली बार G20 समिट का साझा है, सारी दुनिया को साथ बुलाना है, भारत में पहली बार हम हो रहे हैं तैयार, वासुदेव कुटुंबकम का नारा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ही हमारा है, हम हो रहे हैं तैयार, भारत में पहली बार G20 yo yo, G20 yo yo. Topic and
I just loved the way you spoke. It was so good. The confidence. You know, you're the leaders of tomorrow. One day you'll be presenting India and sitting in a G20 summit. That's a wish and a desire. I'm sure it's going to happen. And now sir is going to say something. In the meantime, give me 5. Give me 5. So it was great. So we are learning a lot from all these classes and all this G20. And this is the quite innovative way. First you just explain all the things and then you give the quiz. So you are good teachers. And it is a quite amazing way of recapitulating things. Keep the proud of your school and make India proud one day. So, So big round of applause, a bigger one with a yay, alright? I must say that I am so impressed with the entire school, the presentation, the information that the students have, but that is contribution of the teachers. Amazing it is. So I see the zeal, the commitment amongst the students, and the persona that they reflect is amazing. Another round of applause, can't help it. Another round of applause. बहुत मजा आया आप सबसे मिलके और बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं आपसे. Proud privilege to welcome you all in the world of letter poetry. We would like to give you the token of love from our class. Welcome ma'am, welcome sir. Example, the Declaration of Independence. You can create your own poem by adding or removing words from original text. It is also called erasure or reductive poetry. Thank you. To promote peace in the society, our fellow mates have created an innovative letter poetry. Peace is living because it ensures that you are aware of yourself. Peace is the way out of inequity, violence, and a political rather you are better future of humankind. To aware people about peace, we have started social campaign. We met people and share peace messages with poster and logo of peace. We have also created a booklet in which we have taken peace messages from our teachers and friends. In this way, we have involved our campus family to promote peace. We created a Microsoft form on the topic of peace. We shared it with our classmates and got 28 responses, and we are very happy to see their opinion regarding the peace. It was very interesting and joyful experience of the campaign on peace. We relate this topic as PG60, peace, justice, and strong, secure, and strong institution.
We pledge to care for our earth. With our healing heart and hands. We pledge to respect people. In each and every land. We expect to do our part. To create peace for one and all. Amen. By playing Minecraft, we learn intuition, reason, creativity. We adopt many skills like building skills and management. Minecraft gives us peaceful mind and this is a relaxing game. While playing this game, we come across various building blocks. Nowadays, it is being predicted that AI will change the world. So, to give you the glimpse of the future world, we have created this Minecraft world. In this map, it is a future map. The electricity produced by windmills, hydro plants, as well as solar panels. All of these plants controlled by AI. AI keeps check on working and production of these plants. Firstly, we are going to talk about creativity and imagination. Minecraft allows players to explore their creativity and imagination by building structures, landscapes, and even entire cities. Over to Gursimran. Player must use critical thinking and problem-solving skills to gather resources to survive in the game and build tools. Minecraft can be played with other people, which require teamwork and community. Minecraft can be used to teach basics programming, escape through the use of amounts and plugins. Minecraft can be used to teach geography by using real-life limitations and imaginary worlds by using different biomes. Minecraft is used to recreate the historical events and all time period. Minecraft can be used to teach basic principles of architecture and engineering, such as we can build structures that are both functional and aesthetically pleasing. Overall, Minecraft is a powerful tool that can be used for various kinds of subjects and skills. Just for the end, I'd like to stay with your yeah. Here I am. Swinging on the swords and on the day, but I don't think you maybe won't leave me. Yeah. It's a nice day. I don't wanna fight, I don't wanna die, I wanna be fooled, dig straight down. Sleep through the night, fall through the day, finally piecing all my troubles with you. You can be all the things you ever want to be. That's not for me. I'm living a good life. Living a good life. Thank you, Worthy Principal Ma'am, for making precious time for us and visiting our class. Hopefully, you liked our class and we were able to rely our message to you. Yes, like that. So we have very important guest here. We have Madam Ruby. She runs a wonderful institution in Kapurthala and she's traveled all the way along with one of her staff members and she's going to share what she liked about this class. This particular class, but I think I would first start with the school. What I liked about the school is amazing. I have no words. You know, sometimes you fail to find words to place things or some place. So here is the case today with me. It's amazing environment, ambience and creativity that I've seen inside the school. The teachers mind-blowing, the students showing such zeal and confidence and information, and above all your worthy Madam Dillo, who is your guiding force, and I'm sure you are doing well and you will continue doing well, better and best in the years to come. Wish you all the best. Thank you so much.
The final words from Sir, a line or two. Thank you, ma'am. So great in this class. So technology is inevitable. So we have to learn with how to live with it, deal with it. So we can't skip it. So this is the place. So with the Minecraft and all the educational things that we can get. So like the calculations, like the geography and the science we can do with the help of Minecraft is amazing. So great going and good job. All the students and the teacher did a remarkable job. And that's an awesome and awful effect for us. So great. So good. 1, 2, 3. Yay! Very good, well done. All leaders of the Minecraft. Everyone, myself Virinder. We have recreated worlds of Punjab and Andhra Pradesh in Minecraft. We have taken Golden Temple to represent Punjab and we have taken Yaganti Temple to represent Andhra Pradesh. Now my friends are going to share more about this story. This is the Golden Temple. It is situated in Punjab, Odisha. The construction of the Golden Temple has been started in 1588 and has been finished in 1601. Now my friend is going to show you a 360 view of the Golden Temple. Very beautiful, very innovative. And we have made block by block and it had took 4 to 5 hours to finish. Creative, very good. Very lot of effort. Myself, Prince. I am here to tell you some facts about the Yaganti Temple. The Yaganti Temple is situated in Kurnool district, Andhra Pradesh. It is also known as Shri Yaganti Uma Maheshwari Temple and it is dedicated to Lord Shiva. It is constructed by the king Harihara Pukka in 15th century. Now my friend is going to show you 360 view of Yaganti Temple. Good afternoon, my beloved
because you have put up a great show. It is my pleasure that I have come here and watched your performance. Looking at these boys and girls dancing and celebrating for something which we love and appreciate. I appreciate you for this. You always put up a great show. Thank you. And let's guess, who am I? I am Paramjit Kaur, the principal of Kamla Nehru Public School. Thank you. कि अज आप कमला नेहरू पब्लिक स्कूल आ के देखा कि ये जोड़ा सैलीब्रेटिंग वीक है 4 ਤੋਂ 11 मई तक जिस तरीके अज आप अलग अलग क्लासिस गए देखा कि किस तरीके बच्चों ने जोड़े अपने कला के जोर दिखाए। एक ऐसा स्कूल ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जोड़े इस स्कूल के ने आप देख सकते थे। अज देखे आप सारा कुछ बच्चों की एनर्जी देखी, लैवल देखे। गल करा जोड़े अज के चीफ गेस्ट से सारा और मैडम सर स्वागत है। कहना चाहोगे कि जिस तरीके की एनर्जी तुम बच्चा देखी और जिदा देखा कि 5 घंटे जो कह रहे थे कि 40 मिनटा बाद बंदा बोर होने लग जाता, सौन लग जाता, पर तुहाडा जिहड़ा एंथुसियास्टिकली अज फेस देखने को है कि 2 बज गए ने, तुसीं 5 घंटे लगातार इत्थे ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी एनर्जी लैवल तुहाडे भी पूरे है। बिल्कुल जी, जो बच्चों का एनर्जी लैवल है और इत्थे जो परपज़ है स्कूल का, मैडम उन्होंने स्टार्ट किया लर्निंग मार्केट प्लेस और एक ड्रीम सी कि हर बच्चा स्कूल का पार्टिसिपेट करे और वो तुसी भी देखा और सारे देख रहे हैं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा और हरेक की आपो अपनी इनोवेशन ते क्रिएटिविटी है। बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसनों बाहर कढ़न दे लई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे आ, वो बैक बेंचर्स होंगे आ, वो बहुता कहते अपने आप को एक्सप्रैस नहीं कर पाते, पर इहो जिहा जदों आपां उन्हां नूं प्लेटफॉर्म दिंदे आ ते हर बच्चा अपने आप को प्रतिभा जिहड़ी है वो बाहर कढ़ के आउंदा है। और रही गल एनर्जी की, और इस स्कूल दे विच एंटर कर जाओ तो फिर एनर्जी ही एनर्जी है। और जो बच्चों की एनर्जी लैवल है, बच्चे आई थिंक महीना हो गया वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एनर्जी साडे विच आ रही और उन्होंने मोटिवेशन तो असी मोटिवेट हो रहे हैं कि थकना नहीं और इंजॉय किया है सारा फेस्टिवल जो सी। और जो बैकबोन ने ढिल्लों मैडम जिस तरीके देखा आप किदा उन्होंने शूटिंग जो करते आप अबलाइज करना किसी को कि किन्नी वधिया तरीके दे नाल, और आप उन्हें देख के लगता आपको नहीं लग रहा कि नई नई टीचर आई है, उनको नहीं लगता कि इन्नी ज़्यादा पुराना इन्हों का मतलब जोड़ा है तजर्बा हो गया। हमेशा जी मैं इत्थे जो काम भी किया है तो इस सारी इनोवेशन हुंदी सी और असी एज अ टीचर भी जो कभी मैडम को जाने तो कहते ना कि भी तड़का हरेक इवेंट दे विच हरेक पार्टिसिपेशन दे विच तड़का मैडम का जरूर विच कुछ ना कुछ ऐड होया हुंदा। तो असी एक आइडिया जनरेट करते हैं और आइडिया नू प्रेजेंटेबल बनाना वो हमेशा ढिल्लों मैडम करते हैं और हर स्कूल के बच्चे के बारे जानकारी, बच्चों के पेरेंट्स नाल इंटरैक्शन और जो बच्चों दी एक्टिविटीज़ हैं। ये नहीं है कि मैडम इत्थे बैठे आ तो मैडम को पता नहीं कि
7th ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਵੀ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮਸ। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैडम ढिल्लों नाल मेरी जानकारी CBSE बोर्ड के द्वारा इन्हां दी लीडरशिप के थल्ले 4 स्कूल सी जिहड़े हब च पाए गए बाय दी CBSE बोर्ड। उन्हां विचों साडी किस्मत चंगी सी कि असीं इन्हां दे थल्ले एक लर्नर्स ये मैंटर सी साडे, असीं इन्हां दे लर्नर हैसियत स्कूल दी विच असीं इन्हां दे स्कूल च आए। ये मेरा दूसरा साल है। मैं पहली बारी सिर्फ बच्चे और स्टाफ आए सी, पर वो बहुत खुश और बहुत कुछ सीख के गए सी जो असी जाके फिर उत्थे अपने स्कूल बच्चों में सिखाने की कोशिश की। अज मैनू मेरी खुशकिस्मती है, मैम ने मैंने कहा तुसीं आना है और मैनू हुण मैं सोच रही हाँ कि मैं चंगा किता आ गई, क्योंकि मैनू जो सीखण नूं अज मिलिया है अखां खुलियां ने इस चीज़ नाल कि मैडम ने एक बच्चा इनवॉल्व किया स्कूल का, चाहे वो एवरेज है चाहे बिलो एवरेज है चाहे वो ब्रिलियंट चाइल्ड है। तो अगर हर बच्चे को मौका मिले तो कदे हो ही नहीं सकता कि वो इस स्कूल के बच्चे हर फील्ड में अपना योगदान वध तो वध ना पान, ये नहीं हो सकता और ये पॉसिबल है मैडम की अगवाही हेठ। बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। Preparing them for a future with all the the skills which are required. Communication skills develop ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट करना है वैक्सीन तो कोई इंग्लैंड होगा साइंटिस्ट, कोई अमेरिका होगा, कोई कितने होगा। ऑनलाइन कोलैबोरेशन एंड दैट is how they invent things now. ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਈ ਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹਾਈ 4 ਵਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੈਮ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर एवरीथिंग। ਵੀ ਹੈਡ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर अ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ। ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਈ ਵਹੀਕਲਸ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ G20 ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ G20। And if it is about blackout poetry, वो हुंदी ही है। जे स्कूल नहीं दसेगा तो कित्थों उन्हें पता लगेगा। And they created blackout poetry. And then coming to the CBSE project, जिथे कि आप आंध्रा दे नाल जुड़े हाँ, उन्हां दा गाना, उन्हां दी वेशभूषा, उन्हां दे best states, and the best part was technology. जे असी टेक्नोलॉजी दे नाल हरमंदिर साहिब तैयार किया है, असी उन्हां दा भी टेंपल तैयार किया है और 360 डिग्री व्यू नाल देखा। जे असी माइनक्राफ्ट यूज़ किया तो पूरी क्लास ने माइनक्राफ्ट के बारे दस्या, क्योंकि क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ दे ओन ब्रिक बाय ब्रिक दुनिया बनानी है। इन्होंने तो बनानी है, असी तो इन्हों ही एम्पावर करना है। सो ये स्कूल का यही परंपरा है। ये होंदा क्यों है? फैंटास्टिक टीम स्पिरिट, वंडरफुल टीचर्स who can really implement what we think together. Great vision by a leader, Mr. Pankaj Sardana, जो साढ़े chairman साहब ने, a young chairman with lots of vision, lots of ideas, and who wants to take a long and a big flight for his students. वो सारे दी vision असीं जी सिर्फ put in कर देंगे हैं और बच्चे खुश ने, parents खुश ने, क्योंकि जो चाहते हैं वो असीं provide करते हैं। Something very nice to share is that जे असीं 9th class विच गए हैं तो उत्थे 20 new students थे। मजाल कोई बच्चा होवे जिन्हें नाम बोलिया हो। अप्रैल के महीने विच 8 पब्लिक हॉलीडेज, 4 संडेज, 12 खत्म,
ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, we have about 170 new admissions, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। Empowering children for tomorrow's world is what we believe in, and I think God has been very kind to give us that insight and the vision and the strength to realize our dreams. Thank you very much. But as far as NRIs are concerned, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ NRIs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। Nothing is impossible in this world today, you know. Hostel facility, yes, we can plan it out, but online school is a must, which we'll have a Kamala Nehru public online school. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ graduation ਕਰੋ, when it comes to 10th, when it comes to 12th, we are there to help. Yes, both the points well noted, suggestion ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਰਜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, वो ऑनलाइन सब कुछ नहीं करता, ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਹੈ और ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ would be priority one day. Thank you. Thank you.